Good morning students. Welcome to our maths class. We are continuing with fractions. Today we'll cover this much topic in our chapter, that is fraction. First is what are like and unlike fraction, what are proper and improper fraction, unit fraction, and how to do addition and subtraction of fraction numbers. So today we'll cover this much topic. So let's start with like and unlike fraction. Suppose I am drawing few figures. Okay. If I want to write those in fractions, so can I write 1 upon 4 for this figure? I can write 2 upon 4 for this figure, and 3 upon 4 for this figure. Okay. Now, can you observe that the denominator of each and every figure is same? Denominator means नीचे का number. Denominators are same for each and every fraction. So such type of fractions are called like fractions. The fractions whose denominator are same, those fractions are called as like fraction. जिसके denominator same हो उसे like fraction कहते हैं. Now what is unlike fraction? The reverse of this. Okay. If I want to write the fraction, can I write 2 upon 4 over here? I can write 1 upon 2 over here. 1 shows the shaded part and 2 indicates the total part of the figure. So total parts is 2. That's why I have written denominator as 2 and numerator 1, because only one part is shaded. Now here 1 upon 3. Now observe that here all the denominators are different. So such type of fraction whose denominator are different, those fractions are called as unlike fraction. So the difference between like and unlike fractions are, like fractions has same denominator and unlike fractions has different denominator. Now we'll see what is proper and improper fraction. Let's understand with figure. Suppose I have to write the fraction for this. Can I write 1 upon 4? For this I can write 2 upon 3. See here numerator are smaller than this denominator. ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटे है, राइट? 1 upon 4 में 1 is smaller than 4. 2 upon 3 में 2 is smaller than 3. तो such type of fraction whose numerator is less than denominator, such type of fractions are called as proper fraction. Whose numerator is less than denominator, such fractions are called as proper fractions. Okay. And now for improper fractions whose numerator is greater than denominator. Suppose I write 2 upon 1, 9 upon 3, 8 upon 2. See here numerator are greater than this denominator. Numerator are greater than denominator, then it is improper fraction. And if denominators are greater than numerator, then it is proper fraction. Okay.
ऊपर का नंबर बड़ा हो, नीचे का नंबर छोटा हो. If numerator is greater than denominator, then it is improper. And if numerator is smaller than denominator, numerator is smaller than denominator, or we can say denominator is greater than numerator, then it is called as proper fraction. Now let's see what are unit fraction. Unit fractions are those whose numerator is 1. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 हो, such type of fraction is called as unit fraction. Why unit fraction? Because the numerator is 1. Okay. Now can I say that every unit fraction can be proper fraction? ये सेंटेंस अगर मैं कहूँ देन इज इट राइट? ये राइट हो सकता है कि हर एक जो यूनिट फ्रैक्शन है वही प्रॉपर फ्रैक्शन भी है. व्हाई? बिकॉज इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर छोटा होता है नीचे के नंबर से. तो यूनिट फ्रैक्शन के साथ साथ ये सारे नंबर प्रॉपर फ्रैक्शंस भी है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट दैट एवरी यूनिट फ्रैक्शंस कैन बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. Now let's see example that is comparing the like fraction. First we'll see few examples of comparing the like fraction. We'll compare like fraction. अगर like fractions एक साथ दिए हैं, then how we'll identify that which like fraction is greater or which like fraction is smaller. Okay, so here are few examples. First, which fraction is smaller? See here both are like fraction. Like fractions means the denominators are same. Now we have to compare, is 2 upon 4 is smaller or 1 upon 4 is smaller. Okay. So see here denominators are same. 4 4 दोनों same है. So we ignore this. हमें सिर्फ ऊपर numerator का नंबर देखना है. Now find, is 2 बड़ा है कि 1 है? Is 2 is greater or 1? 2 greater है, that means 1 smaller है. So here our answer is 1 upon 4. Why? Because 1 is less than 2. Okay. Among these 2 upon 4 and 1 upon 4, 1 upon 4 is smaller. Now next, compare 6 upon 9 and 3 upon 9. Here we have to see which is greater. Okay. So now compare 6 with 3. कौन सा नंबर बड़ा है? 6. So we can put this greater than sign. 6 is greater than 3. That means 6 upon 9 is our answer. 6 upon 9 is greater than 3 upon 9. Okay. Now circle the smallest fraction and underline the largest fraction. Here few fractions are given. 1, 2, 3 and 4. 4 fractions are given. We have to circle the smallest. सबसे छोटे fraction को we have to circle and सबसे largest fraction को we have to underline. Okay, so which is the smaller? See here, first of all we have to arrange this numerator in ascending order. ठीक है? Why? Because denominators are same. Denominator तो सबके same है, इसलिए हमें सिर्फ numerator देखना है. ठीक है? तो सबसे छोटा कौन सा है? 1. See 1, 8, 4 और 2 में से सबसे छोटा 1 है. उसके बाद 2, then 4 and then 8. Okay. Now we have to circle the smallest. सबसे छोटा कौन सा है? 1. So we have to circle the smallest and largest. सबसे बड़ा कौन सा है? 8. So we'll underline this 8 upon 6. Now just compare. Is 4 upon 6 is greater or 2 upon 6? 4. Why? Because 4 is greater than 2. So we have to put greater than sign over this 4 upon 6.
Now 1 upon 9 and 3 upon 9. Which is greater, 1 or 3? 3. So we'll put greater than sign towards 3 upon 9. This is how we have to solve if like fractions are given. Now we'll see how we have to do if unlike fractions are given with same numerator. अब हम ऐसी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हो. अनलाइक फ्रैक्शंस मींस जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं. ओके, द डिनोमिनेटर different denominator, the fractions which have different denominator are called as unlike fraction. But denominator तो अलग है, but सबके numerator same होंगे. Let's see exercise regarding this unlike fraction with numerator same. So here are few examples with unlike fraction but numerator same. See, all those are unlike fraction. Unlike fraction means the denominators are different. यहाँ पे दोनों denominator अलग है, that means those are unlike fraction. But numerator same. Numerator same, denominator अलग. अब ऐसे sums को how we have to solve? Let's see. If we want to find the smaller, for like fraction दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते थे तो हम ऊपर के नंबर को सिर्फ कंपेयर करते थे, राइट? और जो छोटा था दैट इज अवर स्मॉलेस्ट. बट इन दिस सच टाइप ऑफ सम्स वी हैव टू कंपेयर दिस डिनोमिनेटर. व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर आर सेम. ओके, सो 9 and 3. 9 और 3 में से छोटा कौन सा है? 3. यस, बट we have to not consider 3 as a smaller in such type of fraction. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर सेम हो उसमें जो बड़ा नंबर है वो हमारा छोटा नंबर हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा. What it means कि 5 अगर 9 है तो 9 is considered as smaller than 3. यहाँ पे रिवर्स है, जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटा कंसिडर करेंगे एंड जो छोटा नंबर है उसे हम बड़ा कंसिडर करेंगे. ओके, तो अब 9 और 3 में से यहाँ छोटा कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस अनलाइक फ्रैक्शन? 9 मीन्स दिस. सो हियर 5 upon 9 इज स्मॉलर. ओके, जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसे हम स्मॉलर कंसिडर करेंगे. Now find greater. Find greater 7 और 5. 7 और 5 greater पूछा है तो हमें छोटा देखना है. ओके, 7 and 5. Compare this 7 and 5. Which is greater? The greater is 2 upon 5. Why 2 upon 5? Because 5 is less than 7. जो छोटा नंबर है that will be our greater in such type of examples. ओके, सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शन में ही ऐसा करना है, उल्टा बड़े को छोटा एंड छोटे को बड़ा. बट इन लाइक फ्रैक्शंस ऐसा नहीं करना है, जो छोटा है उसे हमें स्मॉलर ही कंसिडर करना है. ओके, नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, अब सबसे पहले हमें इसको छोटे से बड़े में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, हम वी हैव टू कंपेयर ओनली डिनोमिनेटर बिकॉज न्यूमरेटर्स आर सेम, तो हमें इसे इग्नोर करना है. तो सबसे छोटा कौन सा है? 2, उसके बाद 3, then 6 and then 9. ओके, असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा. ओके, हमने अब तक जो भी पढ़ा इन असेंडिंग ऑर्डर वी लर्नड दैट असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. ओके, बट हियर इन दिस केस अगर असेंडिंग पूछा है तो हमें उल्टा लिखना है, बड़े से छोटे नंबर लिखने हैं. सो फर्स्ट हमारा आंसर होगा 1 upon 9, then 1 upon 6, then 1 upon 3 and then 1 upon 2. असेंडिंग मीन्स हमें बड़ा नंबर पहले लिखना है. हमारे अनलाइक फ्रैक्शन में 1 upon 9 सबसे छोटा काउंट होगा, 1 upon 6 उससे बड़ा, 1 upon 3 उससे बड़ा और 1 upon 2 is the largest number among all these fraction. Okay,
Now let's find descending order. First we'll convert in ascending. 1, 4, 6, 8. In previous maths we learned descending means from greater to smaller. हमने descending क्या पढ़ा था अब तक? Descending means बड़े से छोटा. But here it is reverse. Descending पूछा है तो हमें छोटे से बड़ा लिखना है. Okay? So which is the smallest number? 1. Okay? So 3 upon 1, then 4, 3 upon 4, then 3 upon 6, and then 3 upon 8. Now next we'll see the examples of proper and improper fraction. In that, first convert improper into mixed fraction. Here few improper fractions are given. We have to convert in mixed. This mixed fraction is new for you. Let us see what is mixed fraction. Improper fraction है. Why? Because here the numerator is greater than denominator. That's why this fraction is called as improper fraction. अब हमें इसे mixed में convert करना है. So what is our step? We have to put 11 as in dividend and 4 as a divisor. हमें ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है. 11 को 4 से डिवाइड करना है. ओके, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. So we can take 4 2 जा 8. The remainder will be 3. Now, how we have to write the mixed fraction? This remainder will goes up in the numerator. ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या मिला? 3. सो रिमाइंडर विल गोज टू न्यूमरेटर. नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा. ठीक है, नाउ 2, दिस 2, ये जो 2 है क्वोशंट, वो यहाँ हमें लिखना है. एंड दिस 4 दैट इज डिवाइजर विल गो डाउनवर्ड्स. जो रिमाइंडर है दैट विल बिकम अवर न्यूमरेटर. दिस डिवाइजर विल बिकम अवर डिनोमिनेटर. And 2 that is quotient we have to write here. So this form of fraction is called as mixed fraction. ऐसे fraction को mixed fraction कहते हैं. ठीक है, you can also write के ये जो नीचे का number है that is denominator. इस denominator को we have to write in denominator as it is. ये 4 as it is we have to write in denominator. तो ये 4 we have already written. Now we are left with 3 and 2. तो नीचे का नंबर वी हैव टू राइट ऊपर, दैट इज इन न्यूमरेटर, एंड 2 वी हैव टू राइट दिस. यू कैन ऑल्सो लर्न और रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो. आप ऐसे भी याद रख सकते हो. नाउ नेक्स्ट 7 अपॉन 3. सो 7 विल गोज इन डिविडेंड एंड 3 विल बिकम एज डिवाइजर. ओके, 7 अपॉन 3 मतलब 7 को 3 से डिवाइड करना है. सो 3 2 जा 6, 1. नाउ व्हाट इज अवर डिनोमिनेटर? क्वेश्चन 3, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर 3 ही होगा. सो ये वाला नंबर हमने लिख दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 एंड 2. तो 1 दैट इज रिमाइंडर विल गोज इन न्यूमरेटर, तो 1 ऊपर चला जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2. अब सिर्फ 2 है, सो राइट 2 ओवर हियर. दिस इज अवर मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ वन मोर, 5 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 2. ओके, 2 2 जा 4, 1. So now we have to write 2 1 2. This is our mixed fraction. Okay, now let's understand how to convert mixed fraction into improper fraction. If they have given mixed fraction and we have to convert into improper. पहले improper दिया था, we have converted into mixed. अब mixed दिया होगा. They have given in the form of mixed fraction and we have to convert this in the form of improper. Okay, so here we have to write this 4 that is numerator denominator as it is in the denominator. जो नीचे का नंबर है we have to write as it is. अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, so 4 into 2. okay, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को इस न्यूमरेटर से ऐड करना है, प्लस करना है. सो 4 इंटू 2 प्लस 1. व्हाट इज 4 इंटू 2? 4 2 जा 8. नाउ 8 प्लस 1 इज 9. सो 9 अपॉन 4. हैव कन्वर्ट दिस mixed fraction into improper fraction. This is improper fraction. Why? Because numerator is greater than denominator. Let's see one more. 8 2 upon 4.
Okay, so 4 we have to write as it is. This 8 and 4 we have to first multiply. So 8 into 4 and 2 add plus 2. What is 8 fours are? 8 fours are 32 plus 2. So what is 32 plus 2 is 34. 34 upon 4 is our answer. This mixed fraction we have converted into improper fraction. Now we'll learn addition and subtraction of fractions in our next video. So today in this video we learned about like fraction, unlike fraction, proper, improper, unit fraction, how to compare like fractions, how to compare unlike fractions with numerator. Okay, hope you have understand and cleared with all the concept. For any doubts, you can see my videos. Thank you and have a nice day.